My friends, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to another session. So as I was saying that अगर आपने अपने एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के अंदर ओवरऑल फोकस करना है, तो अगर आपने बुरे से बुरे कंसोलिडेशन के क्वेश्चन के अंदर से 30 मार्क के क्वेश्चन के अंदर से 20 मार्क्स उठाए, मैं बुरा बोल रहा हूं बाय द वे, और आपने एथिक्स का सवाल बहुत अच्छा किया, उस 20 मार्क्स के अंदर से इजीली 15 मार्क्स उठाए, तो आपके 35 मार्क्स बुरे सिनेरियो के अंदर आपके पास 35 मार्क्स इन योर एग्जाम आ जाते हैं। अब बाकी 50 मार्क्स ऑफ योर एग्जाम्स के अंदर अगर आपने राइट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, जैसे कि मैं अपने लेक्चर्स के अंदर कहता रहा हूं, तो उससे तो आपके मार्क्स आने ही आने, यू विल बी स्कोरिंग गुड। एसबीआर के अंदर ऐसा भी नहीं होता कि आप कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे होंगे, एज लॉन्ग एज यू डू द पेपर फुली। अगर आपने पेपर फुली किया तो एज लॉन्ग एज आपने कोई मेजर भंड नहीं मारा, बाकी 50 मार्क्स के अंदर से यार 15-20 मार्क्स तो मजाक मजाक में भी मिल जाएंगे। तो अडॉप्ट द राइट स्ट्रैटेजी एंड it would be very easy for you to sail away. All right, so again let's start with our ethics के अंदर हम किट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, और मैं आप लोगों के साथ साथ आज पेपर ड्राफ्टिंग भी करूंगा एथिक्स की। ऑब्वियसली मेरे आंसर्स जो होंगे वो मैं थोड़ा सा उसको शॉर्टन अप करने की कोशिश करूंगा, सो दैट आर द लेक्चर डज नॉट in terms of video वो बहुत लंबा ना हो जाए, but yes we are going to focus on how to write an answer as well. Okay, so now let's continue, my friends. We are starting with our question which is given in your Kaplan exam kit. Obviously this is a past paper from September-December 2019, a very good past paper I must say, and this is about Stent company. So as I've always told you, the right strategy to follow a question is that you first go and see the requirements in today's type of examinations. If you see the requirements, the overall it is of 20 marks, और ये बाइफरकेट हुआ है कुछ इस तरह कि आपके पास डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। पहले वाले पैराग्राफ से रिलेटेड यू हैव 4 मार्क्स, सो राइट ऑब्जेक्टिव यू नो कि यार फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ूंगा 4 मार्क्स आ जाएंगे। Then, for example, you have second paragraph, you have 4 marks for this as well. Then you have, my friends, third paragraph, and in third paragraph, you have 3 marks. So 4 marks, 4 marks, and 3 marks. It comes to a total of 11 marks. And in this, your examiner requires is you need to discuss the appropriate accounting treatment which Stent company should adopt for all issues identified above and their impact on gearing. So while you are drafting up your answer, you need to refer that what will be the implications of this accounting strategy on gearing. What would happen on gearing if we follow the strategy or we follow the accounting approach which has been recommended by a particular person, and what will happen to gearing if we follow the accounting policy or the accounting approach that has been recommended by the IAS or IFRS. So you need to talk both ways, and that is why it's the discuss requirements. Marking allocation is shown above. So you know that 11 marks comes from specific accounting issues. Primarily, you don't need to refer ethical principles here. Now, in the other 9 marks of your exam, there you need to discuss about the ethical issues. Remember, this is a critical mistake that students do in their exam nowadays, is that they try to read the whole requirement, whole scenario, and they jumble their thoughts up. वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अल्टीमेटली वो सोचते हैं यार इतना बड़ा पेपर, इतना बड़ा मुश्किल, इतनी सारी चीजें, और आपसे आपका पेपर खराब हो जाता है। तो जस्ट लुक एट द कोर एरियाज दैट आर मेंशन्ड इन योर रिक्वायरमेंट्स। So it says that discuss the ethical issues from the scenario above. उसके लिए 7 मार्क्स आपको मिलेंगे, और ये भी लिख के दिया हुआ है any actions which the accountant should take to resolve the issues, right? तो हमने अपने लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि appropriate ethical implications की आपको appropriate एक्शंस क्या लेने होते हैं। याद है ना आप लोग अप्रोप्रिएट एक्शंस, आप जो भी डायरेक्टर कंसर्न्ड होता है आप उसको अपनी बात रेस करते हैं, आप उसको परसुएट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ना हो रहा हो तो आप बोर्ड को इन्फॉर्म करते हैं। अगर वो ना हो रहा हो तो आप जो है वो ACCA को कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी कोड ऑफ एथिक्स कमेटी को। आप जो है वो लीगल एडवाइस सीख कर सकते हैं इफ एक्सट्रीमली नेसेसरी, एंड एज अ लास्ट रिजॉर्ट यू शुड कंसिडर रिजाइनिंग फ्रॉम योर जॉब एंड नॉट बिकम पार्टी टू एन अनएथिकल सिनेरियो। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि इजी मार्क्स, अगेन सिर्फ एथिक्स के लेक्चर्स भी जिसने सुने हैं उसके लिए इजी मार्क्स प्लेट में रख के आ रहे हैं यहाँ पे, एंड देन यू विल बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स फॉर योर प्रोफेशनल राइटिंग एज वेल।
Yeah. So now I have a strategy in mind. I have A part 1, part 2 and part 3. और मैं ऐसे ही अपने आंसर को स्ट्रक्चर करने वाला हूं. मैं अपनी आंसर शीट के अंदर गया, मैंने लिखा स्टेंट कंपनी. This is the question name. And I am going to focus on A part 1 only, which is about cash advance from Butster company. This is my core area of focus. अभी मैं part 2, part 3 के ऊपर नहीं जाऊंगा. This is the quickest approach to solve your examination question. Now it says that Stent company is a consumer electronics company. It is always advisable to look at the industry first, and whenever an industry is mentioned in a question, just try to think about it. If you're talking about consumer electronics industry, it's very competitive. Understood? Consumer electronics company का मतलब कोई ऐसी कंपनी जो कि मतलब फॉर एग्जांपल फ्रिज बनाती है या दीगर हाउस होल्ड आइटम्स बनाती है जिसमें कंपटीशन जनरली ज्यादा होता है. कंपटीशन ज्यादा होता है और कंपटीशन जब फेयर होता है तो प्राइस वॉर्स होती हैं, और प्राइस वॉर्स के नतीजे में कोई कंपनी बहुत आगे निकल सकती है, कोई कंपनी बहुत पीछे भी निकल सकती है. मेक श्योर ऑफ दैट. अच्छा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इफेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. अगर आपकी इकोनॉमी में कुछ भी बुरा चल रहा है ना, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जनरली लार्जली लोग अपने पुरानी आइटम्स को सस्टेन कर लेते हैं, नई स्पेंडिंग रोक देते हैं. और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन इंडस्ट्री जो कि सबसे पहले इफेक्ट हो जाती है इन टाइम्स ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस. So it says that Stent company is a consumer electronics company which has faced a challenging year due to increased competition. Challenging year hai. Stent company has a year end of 30th September X9. Always remember that when you are practicing in your exam or on the CV practice platform, just highlight key important points such as the year end and the unaudited draft financial statements report and operating loss. अभी ऑडिट हुआ नहीं है, लेकिन जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल आपने खड़े किए हैं, जो अकाउंटेंट ने बनाए हैं, उसके अंदर ऑपरेटिंग लॉस नजर आ रहा है. ऑपरेटिंग लॉस आपको पता है नजर आता है तो किसी भी अकाउंटेंट को अच्छा नहीं लगता एक लॉस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना. In addition to this, debt covenants limits based on gearing are close to being breached, and the company is approaching its overdraft limit. Now there is a terminology written here which is known as debt covenant. What do you mean by debt covenants? Debt covenant means these are restrictions that the lender imposes at the time of providing finance, right? So basically आपने लोन लिया हुआ होगा और जिस लेंडर से आपने लोन लिया है उसने कहा ये होगा आप लोगों को कि भाई मैं आपको रिस्ट्रिक्शंस बता रहा हूं. ये रिस्ट्रिक्शंस खासतौर पे एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है, दोज आर बेस्ड ऑन गियरिंग. उसने बोला कि मैं आपको गियरिंग की रिस्ट्रिक्शंस बता रहा हूं. अगर आपका गियरिंग लेवल एक सर्टेन लेवल को ब्रीच कर गया तो एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ डेट कवेनेंट्स आपके जो लोन्स होते हैं, मैं लिख भी देता हूं, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स your liabilities become immediately due. Your liabilities become immediately due. फौरन कॉल फॉर हो जाती हैं और आपको कंपनी को बेशक वाइंड अप करना पड़े, लेकिन वाइंड अप करके आपको कंपनी को उनके पैसे वापस करने पड़ते हैं. दूसरा मसला ये है कि आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट भी ब्रीच हो चुकी है. तो अगर आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट भी ब्रीच होने वाली है तो आपके पास फाइनेंस का बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा. जो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, उसके पास सरप्लस कैश नहीं बच रहा, उसके पास वर्किंग कैपिटल में लगाने का पैसा नहीं बच रहा, ओवरड्राफ्ट लिमिट भी ब्रीच हो चुकी है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म गियरिंग के ऊपर रिस्क नजर आ रहा है. ऐसे अरसे के अंदर अक्सर लोग अकाउंटेंट्स को याद करते हैं और गलत अकाउंटेंट्स को याद करते हैं, बिकॉज अकाउंटेंट्स के पास अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर रहते हुए कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि भाई फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा इधर उधर करो तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट और लॉस या आपकी कोवेनेंट्स ब्रीच होने से बच सकती हैं, बट दैट इज अनएथिकल. ओके, so the first scenario mentioned in front of you guys is cash advance from Butster company. On 27th of September X9, remember my fellows, your year end is 30th September X9, and we are talking about just few days back, few days before the year end, 27th September X9.
अच्छा, इतनी डिटेल्स कौन सा स्टूडेंट पकड़ सकता है? इतनी माइन्यूट डिटेल्स की 3-4 दिन पहले की बात हो रही है। वो वही बच्चा पकड़ सकता है जो कि क्वेश्चन को स्लोली रीड करता है। यू नीड टू मैनेज योर टाइम इन सच अ मैनर कि आपके पास क्वेश्चन स्लो रीड करने का टाइम मौजूद रहे। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे तो 2x टाइम लग रहा है, लेकिन आप पढ़ते खुद से तो आपको 1x टाइम लगता। लेकिन मेक श्योर कि आप अपनी नॉर्मल स्पीड से स्लो पढ़ें हमेशा क्वेश्चंस को। सही है ना? ऑन 27th of September X9, 3 दिन पहले, Stent Company's finance director asked the accountant to record a cash advance of $3 million received from a customer, Butster Company, as a reduction in trade receivables. आपके पास आपका डायरेक्टर आया है, फाइनेंस डायरेक्टर, और आपको कह रहा है कि भाई ये हमारा एक कस्टमर है, इसका रिसीवेबल भी हमारे पास शायद हो शायद ना हो, इसने एडवांस दे दिया है $3 मिलियन का। फौरन से एक काम करो, इस $3 मिलियन को, इस $3 मिलियन के एडवांस को तुम एज अ लाइबिलिटी नहीं, याद है ना तुम लोगों को भाई IFRS 15 में भी पढ़ा था कि अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर रिसीव हो जाए तो उसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है, अनटिल एंड अनलेस कि आपकी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बाकी ना हो और वो अमाउंट नॉन रिफंडेबल हो। और जो है आपको ये मतलब दो ही चीजें ना, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कोई ना हो और अमाउंट नॉन रिफंडेबल हो, तब जाके आप उसको एज एन इनकम बुक कर सकते हैं। अदरवाइज एन एडवांस इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी, ऑलवेज अ लाइबिलिटी। तो कह रहे नहीं, लाइबिलिटी की फॉर्म में बुक ना करो इसको, क्योंकि लाइबिलिटी के फॉर्म में बुक करोगे तो आपकी टोटल लाइबिलिटीज और बढ़ेंगी, गियरिंग और बुरी नजर आ सकती है, या ओवरड्राफ्ट ब्रीच होने के या करंट लाइबिलिटी ज्यादा होने के और चांसेस नजर आ सकते हैं। उसको एज ए रिडक्शन इन ट्रेड रिसीवेबल दिखा दो। अच्छा आगे सुने जरा, कहानी क्या है भाई। कहते हैं भाई, बटस्टर कंपनी, सुनिएगा जरा, लेट मी जस्ट एडजस्ट द स्क्रीन अ बिट। या okay, so it says that Butster company is a solely owned by Stent company's finance director। अच्छा यहाँ पे एक अलग गेम है, ये बोल रहे हैं भाई बटस्टर कंपनी से हमें एक एडवांस मिला है $3 मिलियन का, जिसका फाइनेंस, और हमें हमारा फाइनेंस डायरेक्टर क्या कह रहा है, इसको एज अ लाइबिलिटी नहीं, एज अ रिडक्शन इन ट्रेड रिसीवेबल दिखाओ। अच्छा, फिर पता ये चलता है कि जो बटस्टर कंपनी है वो फाइनेंस डायरेक्टर की अपनी कंपनी है। यानी फाइनेंस डायरेक्टर गेम क्या कर रहा है कि वो अपनी कंपनी से $3 मिलियन निकाल के यहां डाल रहा है, ताकि लाइबिलिटीज का ब्रीच नजर ना आए, वो अपने एसेट्स को कम रखे, ट्रेड रिसीवेबल से नेटिंग ऑफ कराए, फाइनेंस भी मिल जाए, और थोड़ी सी इंटेग्रिटी की डाउट नजर आ रही है यहाँ पे। The accountant has seen an agreement signed by both companies stating that the $3 million will be repaid to Butster company in 4 months time। अच्छा, ऑल्दो ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, गिवन कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट के अंदर गिवन ये नजर आ रहा है कि भाई 4 महीने के अंदर ये पैसा वापस करना है बटस्टर कंपनी को, और फिर भी क्या कह रहा है कि एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड ना करो, एज अ रिडक्शन इन ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड करो। The finance director argues that the proposed accounting treatment should be acceptable because the payment has been made in advance in case Butster company wishes to order goods in next 4 months। फाइनेंस डायरेक्टर अलग ही चल रहा है, वो कह रहा है कि भाई 4 महीने के अंदर बटस्टर कंपनी, जो कि मैं खुद ही हूं, उसने बताया कि 4 महीने के अंदर अंदर आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे प्राइस लॉक करने के लिए या आपसे डील बिठाने के लिए। आपकी कंपनी से हमने क्या कर लिया, आपको 4 मिलियन जो है $3 मिलियन का एडवांस दे दिया। However, the accountant has seen no evidence of any intent from Buster company to place orders with Stent company। कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही कि बटस्टर कंपनी जो है वो स्टेंट कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर भी सकता है, ना पास्ट में किया होगा तभी इंडिकेशन नजर नहीं आ रही, और आज भी नजर नहीं आती। राइट? तो अब इस केस के अंदर आपसे एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट के अंदर पूछा ये था कि डिस्कस द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच स्टेंट कंपनी शुड अडॉप्ट फॉर ऑल इश्यूज। तो आपको अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्ट्रैटेजी बतानी है कि इसमें क्या होना चाहिए with regards to the solution। अच्छा, if I ask you guys, मुझे जल्दी से and I want you to be very quick, जल्दी से बताएं कि इस पैराग्राफ के अंदर कौन से 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं, कौन से 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो मैंने खुद ही हिंट दे दी कि 2 लग रहे हैं।
अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें अप्लाई हो रही हैं, जल्दी से बता दो कौन कौन सी। बी वेरी क्विक। Very good. One is IFRS 15. This is absolutely correct. You are thinking in the right way. One is IFRS 15. And you know the other one? The other one is IAS 24 related party transaction. This needs to be disclosed, right? So the accountant needs to make sure that a transaction is being taking place with a company which is controlled by a key management personnel, and therefore under IAS 24 that company is a related party, and this transaction, even if it happens, it is recorded as a liability or as a reduction in trade receivables, it must be disclosed in the financials. This is as per IAS 24. So basically two items come into this position. हमें दोनों के हिसाब से आंसर लिखना है. हम स्टार्ट करते हैं जी. I would start with my favorite two words, and you know what are those? According to IFRS 15, or maybe I can put up, all right, I'll follow the same manner. Yeah. According to IFRS 15, any advance received from customer shall be recognized as a liability unless there are two conditions, my friends. You must remember there are two conditions. Yeah. I'm just making it a bit big so that you guys are able to watch this. Unless 2 points, I'll put up some bullet points as well. Unless there is no contractual obligation and no contractual obligation remaining, and the amount is non-refundable, or the contract has been terminated and the amount is not refundable. Right? So first you write what the accounting standard says, and then you can comment on what the finance director was trying to tell you, right? Now you can say that the finance director has advised to recognize the amount of $3 million as a reduction from trade receivables. First, there is no indication that previously some trade transactions have taken place between Stent and Butster Company. So offsetting an amount received from someone else's trade receivable may not be justifiable. You need to include this point as well ना. वो कह रहे थे कि भाई एक काम करो, ये जो पैसा हमें बस्टर से रिसीव हो रहा है ना, बस्टर से रिसीव हो रहा है, इसको जरा हमारे रिसीवल्स के अंदर से नेट ऑफ कर दो. अरे भाई पहली बात तो ये कि या तो ऐसा होता ना कि भाई बस्टर कंपनी का एक रिसीवल पड़ा हुआ है और उन्होंने $3 मिलियन दे दिए, तो अगर सेम पार्टी से रिसीवल हो और सेम पार्टीज का एडवांस आ जाए तो उन दोनों के दरमियान ऑफसेटिंग हो जाए, ये तो चलो कुछ हद तक समझ में आती है. लेकिन आपके पास रिसीवल्स पड़े हैं किसी और पार्टी के, और किसी और पार्टी ने आपको एडवांस दिया, आप कह रहे हैं दोनों का आपस में ऑफसेट कर दें, ये तो कहीं से लॉजिक समझ में नहीं आती, ये तो जस्टिफाइबल ही नहीं है. आई कैन ऑल्सो इंक्लूड, मैं थोड़ा सा आंसर को लंबा कर रहा हूं लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आई कैन ऑल्सो इंक्लूड ऑफसेटिंग is regulated
as per IS1, which only allows offsetting to be done in case there is a legal and contractual acceptance for it, right? In such case हमें नजर नहीं आता कि इनकी आज से पहले कभी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो ये तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत है. Furthermore, accountant has identified as a contractual clause that these amounts are to be paid back after 4 months, and he also deems that a future transaction is not probable. Therefore, this amount received shall certainly be shown as a current liability in the financial statements. However, it should be noted, remember you need to refer Gehring as well in your answer, Gehring as well. It should be noted that Gehring levels shall remain unaffected by either of the approaches followed. However, still finance director needs to be corrected regarding his opinion on accounting treatment. Yeah, done. Furthermore, you also need to refer IAS 24 here. Do not forget. देखो एग्जामिनर ने कहीं ये नहीं कहा था कि आपने IFRS 15 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही जवाब देना है. उसने बोला all appropriate accounting treatments. सही है, 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत लंबा आंसर नहीं लिख सकते बिकॉज इट वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन एटलीस्ट पुट इन IAS 24 so that your examiner knows that you also know IAS 24. All right, so at least put in some point. I would say, furthermore, since Butster is a wholly owned and controlled entity of the finance director, who is a key management personnel, therefore this transaction needs to be disclosed. This transaction needs to be disclosed. Yeah, this transaction needs to be disclosed. आपने इतनी बात कर ली, मेरे ख्याल से 4 मार्क्स के लिए बहुत है, 4 मार्क्स के लिए बहुत है, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डिस्क्लोजर जाना है मैंडेटरी. पॉइंट ये है कि भाई डिस्क्लोजर जरूर जाएगा. ऑलराइट, नाउ 4 मार्क्स के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है. आप यहाँ पे आके रुक जाएं और अब आप चलें रिक्वायरमेंट नंबर 2 के ऊपर. बी पार्ट पढ़ते हैं जरा. सही है भाई, बी पार्ट में जरा देखते हैं. बी पार्ट में बात कर रहे हैं ये लोग प्रेफरेंस शेयर्स की. प्रेफरेंस शेयर्स का क्या कह रहे हैं भाई? On 1st October 2018, यानी साल के पहले दिन, the first day of the year they are talking about. And this is for 4 marks again, remember that. The CEO and the finance director each paid $2 million cash in exchange for preference shares from Stent Company, which provided cumulative dividends of 7% per annum. I'll explain it to you guys. साल के पहले दिन जो CEO और फाइनेंस डायरेक्टर हैं, उन्होंने कंपनी को पैसे दिए और उसके अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर्स लिए. अच्छा, ये प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब आप समझते हैं ना, यानी कि अगर 1 साल आपको आपका रिक्वायर्ड डिविडेंड ना मिला, याद रखना फिक्स्ड डिविडेंड होता है, फिक्स्ड डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर. तो अगर 1 साल आपको 7% का रिटर्न ना मिला, तो ऐसा नहीं है कि फिर गया तो गया, अगले साल आपको पुराने साल का डिविडेंड भी मिलेगा, इस साल का डिविडेंड भी मिलेगा.
फिर तीसरे साल अगर दूसरे साल भी डिविडेंड ना मिले तो तीसरे साल तक कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो टेक्निकली सीईओ एंड फाइनेंस डायरेक्टर हैज प्रोवाइडेड सम मनी टू द कंपनी, और उसके ऊपर गारंटीड रिटर्न है. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, यानी गारंटीड रिटर्न है. उसके अंदर से कहीं भागना नहीं है कंपनी ने. These preference shares can either be converted into a fixed number of ordinary share in 2 years time, या तो ये ordinary shares के अंदर convert किए जा सकते हैं 2 साल के बाद, और redeemed at par on the same date at the choice of the holder. अच्छा जरा सोचें, बाय द वे हर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल जरूर होता है, बिकॉज कन्वर्जन इज एन ऑप्शन ना. या तो आप कन्वर्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो अपना पैसा वापस ले लेंगे. इसका मतलब रिडीमेबल जरूर है. एंड बाय द वे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉर्ड होते हैं, एज अ डेट रिकॉर्ड होते हैं, बिकॉज उनके ऊपर आपकी ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होती है. तो वो कह रहे हैं कि भाई या तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर ये रिडीम हो जाएंगे एट पार के ऊपर इन 2 years टाइम, एंड दैट टू एट द चॉइस ऑफ होल्डर. कंपनी की मर्जी नहीं चलेगी, सामने वाली की मर्जी चलेगी. तो अगर सामने वाली की मर्जी चलेगी तो इसका मतलब वी वुड ऑलवेज हैव एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और शेयर्स. वी आर ऑब्लाइज टू प्रोवाइड समथिंग. गेम सामने वाले के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. सही है. The finance director suggests to the accountant that the preference share. अच्छा जब तक मैं पढ़ रहा हूं ना, जरा सोचिए कि इस ट्रांजैक्शन का यानी इस गेम का इम्पैक्ट गियरिंग के ऊपर क्या होने वाला है. यू हैव टू आंसर मी. The finance director suggests to the accountant that the preference shares should be classified as equity because the conversion is into a fixed number of ordinary shares on a fixed date, fixed for fixed, and conversion is certain given the current market value of the ordinary shares. आपका फाइनेंस डायरेक्टर आपके पास आया और आपको कह रहे हैं भाई इसको इक्विटी ट्रीट करो, क्योंकि ये तो फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड है ना भाई. फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड, अरे भाई फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेट. इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेट. पहले तो यही गलत है फाइनेंस डायरेक्टर. फिर कह रहा है यार यकीन जानो कन्वर्जन जरूर होगी. क्यों कन्वर्जन होगी? कह रहे भाई आज ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये इन द मनी है. आज की करंट मार्केट प्राइस को देखते हुए चलो ना, तो ये क्लियर है कि भाई ऑप्शन जरूर एक्सरसाइज होगा कि ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करा लो. ये फाइनेंस डायरेक्टर का कहना है. अच्छा जाहिर सी बात है मेरा इसके ऊपर क्रॉस आर्ग्यूमेंट है. आपकी कंपनी के कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ब्रीच कोवेनेंट आप करने वाले, ओवरड्राफ्ट लिमिट्स आपकी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं. तो डू यू रियली थिंक इट इज अ वाइज ओपिनियन टू से कि यार ये 2 साल बाद जरूर ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू? Based on the situation that we are seeing right now, from a larger picture, the share price may fall considering competition and breach of covenants. तो क्या 2 साल बाद भी कन्वर्जन लाइकली है? आई डोंट थिंक सो. तो आप मुझे बताइए कि क्या फाइनेंस डायरेक्टर का ये ओपिनियन कि इसको इक्विटी की तरह ट्रीट करें, ये जस्टिफाइबल आपको नजर आता है? जस्टिफाइबल नजर आता है? हाँ कि ना? बताइए जी. हाँ कि ना? बिल्कुल नजर नहीं आता भाई. अच्छा ये जो काम कह रहा है, इसका गेयरिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ना था? भाई ये लोगों ने जो पैसा दिया, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद पेबल है, तो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बढ़ेंगी. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो आपकी गियरिंग बढ़ेगी. गियरिंग बढ़ेगी तो उसका अल्टीमेट क्या होगा कि आप कोवेनेंट ब्रीच कर जाएंगे. देखो आज कंपनी की ओवरड्राफ्ट लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो कंपनी को चाहिए थे पैसे. सीईओ और फाइनेंस डायरेक्टर ने कंपनी के अंदर पैसा इंजेक्ट कर दिया और बोला इसको इक्विटी की तरह ट्रीट करो, क्योंकि अगर इक्विटी की तरह ट्रीट किया तो हमारी गियरिंग लेवल्स भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे और कंपनी की जो ओवरड्राफ्ट लिमिट एग्जॉस्ट हुई है उससे हम बाहर निकल के आ जाएंगे, बिजनेस चलता रहेगा. हालांकि इन रियलिटी देखें तो इसकी नेचर डेट की है, और जब आप इसको एज ए डेट रेकग्नाइज करेंगे तो कोवेनेंट ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यही रियलिटी है. डन. सो इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर यहां पे लगता है IFRS 9. याद है ना IFRS 9 के अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ इक्विटी की बात थी और हमें राइटफुली प्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस ओवर फॉर्म. तो मैं वही रेफर करने वाला हूं अपने आंसर के अंदर भी. तो लेट अस जस्ट गो एंड क्विकली राइट एन आंसर फॉर 4 marks. ओके, वी आर फोकसिंग ऑन पार्ट A, पार्ट 2
which is preference shares. Now, like I always say, I always start my answer with two famous words, and those are according to. I always like to refer to the accounting standard first. That is my style, and obviously you need to follow it. So I would say that according to IFRS 9, an equity instrument is an instrument that provides residual interest in the net assets of the entity. Furthermore, classification of equity should be based on substance over form and not just legal terminologies. For example, the accountant should consider facts of fixed obligatory payments and redemption of initial investments while reaching a conclusion on whether the instrument should be classified as debt or equity. या सो फर्स्ट मैंने क्या किया कि मैंने अपने सवाल को स्ट्रक्चर करने के लिए थोड़ा सा IFRS 9 का जिक्र कर दिया, and now you need to connect to the question, yeah, application of the scenario. In this case, cumulative preference shares have been issued by the company. This means that there is an obligation to settle 7% return on investment, even though when a company is not profitable, and the same amounts to be paid in future years if not paid in 1 year. So if you cannot pay a dividend in 1 year, then even if you're not profitable and you cannot pay the dividend in 1 year, you have to accumulate, you have to add up the dividend and pay it in the next year, right? This creates an obligation to deliver cash on the entity just in the same manner as a commercial loan does. Furthermore, these preference shares can be redeemed on cash value, redeemed in cash after 2 years, which is also an obligation to deliver cash. Yeah. Conversion seems unlikely because though the share price reflects in the money situation now, however, due to competition and potential
breach of contracts, the share price may go down, and eventually the cash redemption option is probable to be exercised. Hence, as per IFRS 9, the instrument should be classified as a financial liability. Yeah. So you also referred the accounting standard, and you also said that this should be this should be classified as a financial liability. Understood? You remember that your examiner said that you always need to refer to the implications on gearing. So you need to make sure कि आपने gearing वाला part जरूर डाला हो, वरना उसके marks नहीं मिलेंगे. The director's proposal to classify as equity would most likely be due to the fact that gearing covenant should not be breached. That is, if these shares are classified as equity, the gearing level would rather reduce due to the additional equity, and thus a breach can be avoided. Yeah. Therefore, a breach can be avoided. This would have been the intention of your finance director. However, once classified as a long-term liability, repayments in 2 years, this will most likely lead to an increase in gearing and breach of debt covenant. Yeah. So you mentioned what the accounting standard says, what should be done in this scenario. फाइनेंस डायरेक्टर की जो बात आ रही है कि यार ये काम इस वजह से हो रहा होगा, ये इस वजह से करना चाह रहा होगा, आपने ये भी बताया, और उसका गियरिंग के ऊपर फाइनेंस डायरेक्टर की पॉलिसी के हिसाब से गियरिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट था, और जो आईएफआरएस के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे उसके हिसाब से क्या इफेक्ट होगा, वो दोनों आपने बताए. आई सर्टेनली बिलीव दैट फॉर 4 मार्क्स दिस इज मोर देन इनफ. ये काफी है आपके लिए लिखना. अंडरस्टूड? मुझे जरा सब लोग कंफर्म करें कि अभी तक जो हमने आंसर ड्राफ्ट किया, क्या वो आप लोगों को समझ में आता है? बी वेरी क्विक एंड आंसर प्लीज. Yes, everyone. Is this understood? Great. Now let's move forward. Now let's discuss on the third part of your question, which is for 3 marks. And it says, talk about deferred tax assets. Stent company includes a deferred tax assets in its statement of financial position based on the losses incurred in the current year and previous 2 years. So you are including a deferred tax asset. You remember na, according to IAS 12, जो आपके unutilized tax losses होते हैं, उनके अगेंस्ट आप एक deferred tax asset बुक कर सकते हैं, लेकिन उसकी 2 कंडीशंस थी. पहली बात तो ये कि आपके टैक्स लॉ के अंदर कैरी फॉरवर्ड ऑफ टैक्स लॉसेस अलाउड हो. दूसरी बात ये कि आपके पास फोर्सिएबल फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स हो, जिसके अगेंस्ट ये टैक्स लॉसेस ऑफसेट हो जाएंगे, तो आप डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज फॉर श्योर कर सकते थे, उसमें कोई मसला नहीं है. एंड दे हैव बीन डूइंग दिस based on the losses that have incurred in this year and previous 2 years. The finance director has asked the accountant to include the deferred tax assets in full. He has suggested this on the basis that Stent company will return to profitability once its funding issues are resolved. क्या कह रहा है भाई?
भाई आपका डायरेक्टर ये कह रहा है कि भाई पहले आपकी अजम्पशन क्या थी कि आप करंट ईयर लॉसेस और लास्ट 2 इयर्स के लॉसेस का सिर्फ लास्ट 2 इयर्स के लॉसेस का इम्पैक्ट आप डेफर टैक्स एसेट के अंदर लेके जाते थे। आप डायरेक्टर कह रहे हैं भाई जितने भी लॉसेस है ना, जितनी भी लॉसेस है सबको इंक्लूड कर लो, कोई असेसमेंट की जरूरत नहीं है, सारी बातें छोड़ो, बिल्कुल डेफर टैक्स एसेट को इस बार हमने बैलेंस शीट में दिखाना है। इस वजह से क्योंकि बस कल कंपनी प्रॉफिटेबल है, कोई टेंशन थोड़ी है, कंपनी तो बहुत टाइट चल रही है भाई, कल कंपनी प्रॉफिटेबल है। क्या आपको नजर आ रहा है कि नियर फ्यूचर के अंदर इनके फाइनेंसिंग इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे? क्या आपको नजर आ रहा है? इन माई ओपिनियन, बेस्ड ऑन द सिचुएशंस दैट आई हैव बीन रीडिंग, कि इंक्रीज्ड कंपटीशन है, ओवरड्राफ्ट लिमिट्स एक्सपायर हो चुकी हैं, डायरेक्टर्स को फंड करना पड़ रहा है, अपने फाइनेंस डायरेक्टर की कंपनी से पैसे उठाने पड़ रहे हैं, तो शॉर्ट रन के अंदर हो सकता है आपके फाइनेंसिंग इश्यूज रिजॉल्व हो गए हों, लेकिन आपकी डेट रीपेमेंट्स भी हो रही होंगी लॉन्ग टर्म डेट की, तो मेरे नहीं ख्याल आपके फाइनेंसिंग इश्यूज रिजॉल्व हो गए। तो जब तक आपको ये क्लियर कट प्रोबेबिलिटी ना नजर आ जाए कि अगला साल प्रॉफिटेबल है, उसका अगला साल प्रॉफिटेबल है, तो आप कैसे डेफर टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? फॉर दिस ऑब्वियसली बात है, आपको फर्दर इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, आपका बजट, आपका बेस प्लान होना चाहिए जो कि आपको ये बता रहा होगा कि आप अगले साल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन इन रियलिटी सिचुएशन ऐसी नजर नहीं आती, इन रियलिटी सिचुएशन ऐसी नजर नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। क्लियर होती है बात? ये कह रहा है डायरेक्टर, जवाब दे देते हैं भाई। डेफर टैक्स एसेट 3 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, 3 मार्क्स जितना ही लिखेंगे। ओके, आई विल रेफर टू IAS 24, IAS 12 first. According to IAS 12, a defer tax asset shall be recognized on taxable losses if, number one, what was the point? Carry forward and set off of tax losses is allowed, and there is future probable taxable profits against which these losses can be offset. In current circumstances, and now I'm just connecting it with the scenario, okay? In current circumstances, the company has not, in fact, resolved its financing issues. There is a temporary relief by contributions of funds from Butster and issue of preference shares. However, my friends, however, since debt covenants are about to be or are expected to be breached, the loans shall be immediately called upon, and as a result, those funds can be useless for sustainability. Hence, it is unlikely that company goes profitable in the foreseeable future, and therefore deferred tax asset shall not be recognized. The impact of recognizing deferred tax asset shall not be upon gearing.
You know, if you recognize a deferred tax asset, it does not disturb your debt or equity. So if it does not affect your debt or equity, then certainly आपकी gearing के ऊपर कोई impact नहीं है. However, if the earlier deferred tax asset is derecognized, then it would lead to a deferred tax charge, which will ultimately, let me correct my spelling, please, ultimately dilute this year's profits and retain earnings and reduce equity level hence gearing will increase. Yeah, so I've just pointed out this fact. देखिए इनिशियली तो एक इंसान ये बोलेगा कि यार डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गियरिंग के अंदर तो आता नहीं है, डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी के अंदर तो आता नहीं है. लेकिन आप लॉजिकली सोचें, इन्होंने अगर पास्ट के अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ है जिसको आप डी रिकॉग्नाइज करेंगे तो पीएनएल के अंदर एक चार्ज क्रिएट होगा, डेफर्ड टैक्स चार्ज क्रिएट होगा. पुराना एसेट है, पुराने एसेट को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट हो जाएगा, पीएनएल डेबिट हो जाएगा. उस डेफर्ड टैक्स एसेट के चार्ज की वजह से आपका पीएटी गिरेगा. जब पीएटी गिरेगा तो रिटेन अर्निंग गिरेगी, जब रिटेन अर्निंग गिरेगी तो इक्विटी गिरेगी, जब इक्विटी गिरेगी तो डेट का रेशो इक्विटी से ज्यादा हो जाएगा और गियरिंग बढ़ जाएगी, आपका ब्रीच ऑफ कोवेनेंट हो जाएगा. ये वाली बात जरूर लिखनी चाहिए है. मुझे बताइए, अब हमने ए पार्ट पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है, पूरा का पूरा ए पार्ट सॉल्व कर लिया है. कि आपको मेरी बात समझ में आती है, हाँ या ना? बताइए जी, समझ में आई जी? अब मुझे बताइए, आप अगर बैठे हैं दिसंबर 2019 की अटेम्प्ट में और आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट यू कैन डू? The most common mistake that you can do it is कि that you consume a lot of time. देखिए, मुझे लिखने में इतना टाइम नहीं लगा, मुझे सोचने में भी इतना टाइम नहीं लगा, मुझे सिर्फ पढ़ने में टाइम लग रहा है और आपको पढ़ाने में टाइम लग रहा है. अदरवाइज इट्स फॉर श्योर कि अगर मैंने बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे लगा दिया तो मेरा बाकी पेपर खराब हो सकता है. अदरवाइज दिस वुड हैव बीन द इजीएस्ट क्वेश्चन एंड इजीएस्ट अटेम्प्ट टू पास. आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस. हाँ, तो फिर थोड़ा सा आगे चलें तो मेरे ख्याल से हमने पार्ट नंबर 11 मार्क्स तय कर दिए हैं. अब बात कर लेते हैं पार्ट बी के ऊपर, जिसके अंदर हमें बात करनी है, वी नीड टू डिस्कस द एथिकल इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द सिनेरियो, इंक्लूडिंग एनी एक्शंस व्हिच द अकाउंटेंट शुड टेक टू रिजॉल्व द इशू. एथिकल इश्यूज क्या आए और उसके अगेंस्ट एक्शंस क्या लेने चाहिए. अच्छा, एथिकल इश्यूज क्या क्या आए अभी तक अगर हम बोलें तो एथिकल इश्यूज ये आया कि भाई आपका फाइनेंस डायरेक्टर आपको कोई बात बोल रहा है, आप अगर उसको फॉलो करते चले जाएं तो इसका मतलब आपकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो रही है. इंटिमिडेशन थ्रेट है ना, सामने वाला आपको बोल रहा है कि भाई आपने मेरी बात माननी है, मैं तो फाइनेंस डायरेक्टर हूं. अगर आप उसकी बात मान जाते हैं तो आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस ले लिया किसी और का और आपकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर रिस्क है. फिर अगर आपको ये बातें, अगर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पता ही ना होती तो इसके आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर भी डाउट आ सकता था. हाँ, एथिकल इश्यूज है. सवाल पढ़ें तो लिखा हुआ है, द अकाउंटेंट हैज बीन इन हर पोजीशन फॉर ओनली अ फ्यू मंथ्स एंड द फाइनेंस डायरेक्टर हैज रिसेंटली कमेंटेड दैट all these accounting treatments must be made exactly as I have suggested to ensure the growth of the business and security of all our jobs. So the accountant is saying, your finance director is saying that if you want your job, so make sure that these accounting treatments are followed as is. Both the finance director and the accountant are fully qualified members of ACCA. तो दोनों के ऊपर ACCA का कोड ऑफ एथिक्स जरूर अप्लाई होता है. आपको बताना है भाई इश्यूज, एथिकल इश्यूज फ्रॉम द सिनेरियो अबव. तो भाई बात शुरू करते हैं. जरा छोटा सा आंसर लिख देता हूं मैं आपके लिए. पार्ट बी, एथिकल इश्यूज.
देखिए पूरे सिनेरियो के ऊपर, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपको नहीं लिखना, पूरे सिनेरियो के अंदर क्या एथिकल इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं आपने वो लिखना है। तो आप फाइनेंस डायरेक्टर की भी बात कर सकते हैं, उसके ऊपर भी कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है, और आप अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव में से भी बात कर सकते हैं, उसके ऊपर भी कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है। तो अनटिल एंड अनलेस कि आपका एग्जामिनर आपको कहता है कि भाई डिस्कस फ्रॉम द अकाउंटेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा तो नहीं बोला, तो आपने पूरे सिनेरियो के अंदर एथिकल इश्यूज के ऊपर बात करनी है, इन टोटलिटी के ऊपर बात करनी है। The finance director is a member of ACCA, and therefore ACCA's code of ethics is mandatorily applicable on him. However, the finance director has not maintained integrity by recommending accounting treatments that are not compliant with IAS and IFRS, just due to safeguard job security. The finance director, you don't write these shortcuts, okay? Only I can write those. The finance directors should have been straight forward and honest in this scenario. Furthermore, self-interest threat has diluted his objectivity because he is only focusing, he seems only focusing to avoid implications, to avoid covenant breach by proposing false or incorrect accounting treatments. The finance director is not being objective, self interest के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है, बोले भाई मेरी जॉब बच जाए किसी तरह, मैं CFO हूँ कंपनी का, मैं फाइनेंस डायरेक्टर हूँ कंपनी का, मैं किसी तरह ब्रीच अवॉइड कर दूं, बस मुझे ये इस बात की पड़ी है, मुझे और किसी चीज की नहीं पड़ी. If the finance director is unaware of the correct accounting treatments, then this would also cast a doubt on his professional competence. You can specify specific code of ethics words by just bold, making them bold, so that examiner knows that you're referring to a particular ethical principle, ethical code. Yeah, would cast a doubt on his professional competence, which requires an accountant to maintain his or her knowledge at a level that is necessary to provide quality services to employer or client.
On the other hand, now we are going to talk about the accountant as well, okay? On the other hand, the accountant is new to her job and may feel intimidated by her finance director's attitude towards the proposed accounting treatment. However, as per the objectivity principle, again, you can highlight the specific code of ethics while writing your answer so that your examiner knows specifically you're talking about a particular ethical principle, okay? However, as per the objectivity principle, she should not allow undue influence of others to affect her work, which is to faithfully present financial information. Yeah, she should not let this undue influence affect her professional opinions. Yeah, she should maintain integrity. Oh no, she should maintain integrity and be straightforward and honest with her finance director. She should be straightforward and honest with her finance director. Now, these are some of the issues that I have highlighted. Maybe you can write, 2 or 3 more principles here. That is all up to you. But at this point in time, I feel that we have referred. I'm much more interested in the approach of solving a question. So in my opinion, this is the kind of write-up that you should be presenting in your examination to score a good mark, right? एंड यू आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लंबा 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 लिखने की कोशिश करें, बट यू नीड टू मेक श्योर कि सारे पॉइंट जरूर कवर हो रहे हो, और उन सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए आपको 10 पेज भरने पड़ जाए, आई डोंट केयर, बट मेक श्योर दैट ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड. ओके, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि आपसे पूछा गया था इंक्लूडिंग एनी एक्शंस दैट अकाउंटेंट शुड टेक टू रिजॉल्व द इश्यूज. आई कैन राइट अ हेडिंग, एक्शंस possible actions that accountant may take in sequence. I would say the accountant should persuade. Now, this is the kind of thing that you should be writing in your answers. Persuade. Yeah. Try to convince. Persuade the finance director to follow correct accounting principles in order to ensure true and fair view of financial information. If not satisfied, then she can refer this issue to the relevant forum like board of directors. If not satisfied, then she can refer this issue to the relevant forum, which is like board of directors. She can seek advice from ACCA or seek legal advice if necessary. However, as an extreme decision, she should consider
resigning from her position and ensure that she does not become party to this wrongdoing. Yeah. So as a last resort, what she can do is that she can resign from her position and not become party to this scenario. मुझे बताइए कि आप लोगों को बात समझ में आती है. In my opinion, for 7 marks and maybe you can add 1 or 2 more points and you can devise a better answer. But I certainly think for 7 marks and 2 professional marks, this is the kind of write-up that you should be putting up. Yeah. And I certainly believe that अगर आप लोग ऐसे चल के किसी भी आंसर को सॉल्व करते हैं, I don't think that you'll be losing very much marks. This is very easy. So consolidation के अंदर से और ethics के अंदर से अगर आपके मेजर मार्क्स आ जाते हैं तो सर जी आपकी गेम ओवर है. आप वैसे ही आगे निकल जाएंगे. पेपर के अंदर अच्छा स्कोर करना, SBR जैसे पेपर के अंदर अच्छा स्कोर करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं. Now just let me know कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती.